Dear friends, Dr. Madhuri Roy, Director of Conceive IVF with you. शादी हो गई है लेकिन अभी बेबी प्लान नहीं करना। आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं, या कई ऐसे हैं मैरिज नहीं हुई है, करियर प्लान करना है, फाइनेंसेस है, सेटल होना है लाइफ में और फिर मैरिज करना है। इन सारी सिचुएशन में आज जो हम कह रहे हैं, देख रहे हैं, कहने सुनने में आ रहा है कि बहुत इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए? अभी तो मैरिज नहीं करनी है, सो क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी फर्टिलिटी चेक कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में मुझे बेबी चाहिए तो एम आई फर्टाइल इनफ? कैन आई चेक दैट टुडे? सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि फर्टिलिटी असेसमेंट कैसे करनी है या क्यों करनी है। पहले कुछ सालों पहले हम सिर्फ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग पेशेंट्स को एडवाइस करते थे, बट आज बिकॉज ऑफ द डिलेड मैरिजेस एंड इंक्रीज इन द इनफर्टिलिटी incidences or percentage, now we try to combine pre-conception counseling with fertility assessment. तो जानते हैं कि ये क्या होता है। You and your spouse should visit the doctor and figure out what is my general health and what is my fertility. So what we do, we will be checking your general health thoroughly. It starts with the history. In our practice or in any medical practice, a thorough detailed medical history is very important. Why? क्योंकि ये हमें बताता है कि नेक्स्ट फिर क्या करना है, पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशंस क्या करने हैं, और उसी से फिर डिसाइड होता है ट्रीटमेंट लाइन। सो वी स्टार्ट विथ लुकिंग एट योर एज, एट व्हाट एज यू आर नाउ, आप कितने साल से मैरिड हैं, how long you have been trying or not trying for the pregnancy, what type of contraceptions you are using, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफस्टाइल में आपका एक्टिव या सेडेंटरी लाइफ है, what are your addictions, how is your psychological state, how is your sexual practices, what is the frequency of intercourse. All these things guide us to your problems and solutions. Along with that, any medical history in the past, any surgical history in the past, that also decides the diagnosis. Any history of past abortions, these are very important. So, detailed medical history होने के बाद क्या? फिर हम चेक करते हैं 5 things. First and foremost is your general health. General health में आपका BP, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज बोथ प्ले इक्वल रोल. देन योर शुगर लेवल्स, योर हीमोग्लोबिन लेवल, बिकॉज हाउ हेल्दी यू आर, योर vitamin levels, vitamin D, vitamin B12, all these levels are checked. If you have any positive genetic history, then we also suggest karyotyping in male and female, as well as hemoglobin electrophoresis. जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सिकल सेल और थैलेसीमिया, इनको चेक करने के लिए HB electrophoresis. All this is a part of pre-conception counseling and testing. General health होने के बाद then comes our fertility check. इसमें हम 4 चीजों के बारे में पता करते हैं। पहला है, हमें 4 चीजें चाहिए होती है प्रेग्नेंट होने के लिए, जो साइंटिफिकली हम चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट, ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइफ मेकिंग प्रोसेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट 4 थिंग्स विच वी कैन चेक साइंटिफिकली आर यूट्रस, जो हमें स्कैन से पता चलता है, हम सोनोग्राफी करते हैं जिसमें देखते हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, पॉलिप्स है, एडेजेंस है, कुछ सेप्टेशंस है, अबनॉर्मल यूट्रस है, ये सारी चीज स्कैन से देखी जाती है। ओवरीज, ओवरी में सिस्ट है, नॉर्मल लुकिंग ओवरीज है या पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, ये सब हमें स्कैन से या सोनोग्राफी से पता चलता है। फिर है ब्लड टेस्ट, फर्टिलिटी ब्लड टेस्ट. Here we are not checking your hemoglobin but your fertility hormones like FSH, LH, estrogen, progesterone, even testosterone, because ये हमारे ovulation में affect करते हैं. Then thyroid levels and
वेरी इंपॉर्टेंट AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि हमारा एग रिजर्व हमें बताता है। ये सारे ब्लड टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग थ्रू। सो ये हो गया यूट्रस, ये हो गया ओवरी एंड ओवरी का फंक्शन। थर्ड थिंग टू चेक इज द fallopian tubes, because that is very critical. The baby first forms in the tube. So tubal patency test called as HSG or HycoZ or hysterosonosalpingography, that is done to see whether the tubes are open or not. Then remaining fourth, which accounts for 50% of your fertility, that is the male partner's semen check or a semen analysis. Here we check for how is the count, how is the motility, whether there are any abnormal sperms in the semen sample. So these are the tests which are done for you for the fertility assessment. Once you do this, you might come up with a good surprise which says that everything is normal. So your doctor is not going to treat you here. You see, the doctor is going to send you home with little bit of advices, and you can plan your pregnancy whenever you want. Doctor is going to tell you you have 1 year, 2 years wherein you can wait and then plan the pregnancy. If you are planning it right now, they will advise you about the days of ovulation, when to have the intercourse, and you are free to plan the pregnancy with a little supplements of your folic acids and vitamins. But if any of these tests come negative means abnormal, then and there your treatment should start, so that your fertility does not decline. If there is a tubal blockage, then doctor will suggest you to go for IVF. If there is a PCOD, then PCOD treatment, then IUI and IVF. If there are sperm issues like less sperms, then you will advise IUI. If there are a very bad semen count, then you might need IVF and ICSI. If uterus has some problems, then you might need laparoscopy, hysteroscopy, and after that the fertility treatment. So dear friends, do not get scared to go to the doctor. Okay, we don't want a baby right now, we should not go, but I tell you, you should go now, so that in future you do not actually suffer from infertility, and you will be able to conceive most probably naturally after this. Come, let's make you a family. Thank you.